if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tanya and welcome to another video. आज का जो वीडियो होने वाला है, it's gonna be a birthday get ready with me. So by the time you'll be watching this video, probably मेरा birthday over हो चुका होगा. But I do this every year and I love filming a birthday get ready with me. So इस साल मेरे birthday के लिए I wanted to go with like a Bridgerton Victorian feels kind of outfit and makeup. So makeup बहुत ही simple रहेगा, but it's gonna give like all glam. एंड हेयर भी उसी हिसाब से है, सो मैं वो भी बताऊंगी मैंने कैसे बनाया था. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइज मैंने कैसे क्या करा एंड लेट्स गेट इनटू इट. By the way, this is the first time that I'm filming in my room, and I think I should do it more often because I really like how the lighting is over here. And talking about this birthday get ready with me, इस साल birthday vlog नहीं आएगा because I did very basic stuff. मैं बॉम्बे में ही थी, मैं सिर्फ खा रही थी रेस्टोरेंट्स में जाके, कैफेज में जाके, मैं फ्रेंड्स रात को there were friends at home, so I did not feel like vlogging this time. So there's no birthday vlog, but birthday get ready to banta hi hai. So let's get started. The first thing that I do always when I want to have like a really good base is use a primer. So I'm using this one by Lakme. I've had this since forever now, and I'll make sure कि मैं सारे products description में भी tag कर दूँ, so आप इसे check कर लेना. And when I talk about makeup, I feel I'm not the best with makeup, but I really enjoy doing the same makeup every time. मेरा बहुत अलग makeup नहीं होता है. It's very minimal, but yet it can look glam feel I feel. So बस मैं थोड़ा सा प्राइमर लेके अपने स्किन में पूरा ब्लेंड कर लेती हूँ जिससे जो मेरा बेस है वो एकदम इवन आउट दिखे. एंड प्राइमर इज ऑल्सो गुड टू मेक श्योर कि आपके पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो. सो जस्ट अप्लाइंग द प्राइमर. ओके, प्राइमर इज डन. अच्छा, आप लोग कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है, हाउ ओल्ड डिड आई टर्न दिस ईयर. And the next step that I do is foundation. So this is the only foundation I've ever used. I don't use any other foundation. It's a Maybelline Fit Me foundation, and I'm in the shade 128. So if you have my skin type, you can probably go for this shade. I love this foundation. Otherwise, most of the foundations बहुत cakey दिखाने लगता है आपका face, but ये इतना ज़्यादा अच्छा है. It doesn't make your face look cakey at all, and I really enjoy using it. Now I am someone who doesn't uses a lot of brushes और ब्यूटी ब्लेंडर्स. मेरे पास पूरा डब्बा पड़ा है पीछे, बट आई डोंट यूज इट. आई एम मोर कंफर्टेबल यूजिंग माई फिंगर्स, सो आई एम गोना यूज माई फिंगर्स टू ब्लेंड. सो yeah, you can do whatever works out for you. So I'm gonna take a little bit. Foundation के केस में मुझे लगता है less is more. So I'm gonna take literally one drop and dab it all over my face. Okay, you can see this is a very skin like finish and ऐसा लग भी नहीं रहा है मैंने फाउंडेशन लगाया है, yet वो extra add up हो गया है स्किन पे. So I really like how it looks. Now the next step is very simple. जैसे कि मैंने बोला मैं बहुत ही basic makeup करती हूँ, so this is something जो आप everyday में भी कर सकते हो. Then I use a concealer. So this is the Maybelline Fit Me concealer in the shade 20 Sand. So that's my shade. मैं यूजली दो कंसीलर्स यूज करती हूँ, या तो मेबेलिन एंड लॉरियल, या तो दोनों में से कोई एक. आई लव लॉरियल कंसीलर ऑल्सो, बट एट द मोमेंट में मेरा खत्म हो चुका है, सो मेबेलिन इट इज राइट नाउ. सो थोड़ा सा अंडर आईज में, अपर लिप अ लिटिल बिट, सिंस मैंने यहाँ फाउंडेशन नहीं लगाया है, वेरी लिटिल. एंड आई एम गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ माय लिप्स. थोड़ा सा जो पिगमेंटेशन अगर मुझे लगता है, although lately my skin has been very well touched wood, it's been behaving except like 2-3 pigmentation marks और कुछ major नहीं है skin पे, which I really like. So let me know अगर आपको एक skin care routine चाहिए, honest skin care routine. I love to shoot it and film it. लेकिन मुझे ना skin care करने में बड़ा मजा आता है makeup से ज़्यादा, because makeup लगा रही हो तो फिर हटाना भी पड़ेगा. Skin care तो रह गया skin पे, so let me know if you want that. एंड बस इसको मैं हल्का सा डैप करूंगी अपनी फिंगर से ही, सिंस आई डोंट यूज अ ब्लेंडर और अ ब्रश. Okay, concealer is also blended, and we are gonna come to the last step of my base, that is setting it up with a compact powder. So this is the powder that I use. It's by Maybelline. It's a Fit Me powder, again in the shade 120 Classic Ivory. I'm a Maybelline girl altogether when it comes to my base, क्योंकि बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं इनके प्रोडक्ट्स, एंड आई रियली लाइक यूजिंग इट. इसके लिए मैं फिंगर्स नहीं यूज करती हूँ. आई एम यूजिंग अ पिज्जा पफ राइट हियर, सो आई एम गोना टेक सम अमाउंट
Oh, मेरा pizza puff ही गंदा है. एक second guys, I'll just switch this pizza puff. Okay, I have 3 pizza puffs just in case एक गंदा हो. तो but मेरे 2 गंदे इस time, so I'm gonna use this. So this is how the compressed powder looks like. Gonna take some and just dab it under my eyes like this to just set it all so that it doesn't melt because it's very hot and I don't want my makeup to melt. Okay, my base is done guys. This is how my base looks. बहुत major difference नहीं है, but dark circles छुप गए हैं, blemishes जो थे वो चले गए हैं, skin even out लग रही है. That's all I do for my base. Now after the base, I do my eyes. कई लोग eyes पहले करते हैं, but I like doing it after the base. So for my eyes, I'm using this Nykaa का eyeshadow palette that a friend gifted me last birthday, जिसकी हालत थोड़ी सी बुरी हो चुकी है. I don't know, it's just the palette. अदरवाइज मेरे बहुत पैलेट्स है वो खराब नहीं होते बट दिस जस्ट ब्रोक ऑफ बट आई लव दिस पैलेट सो इसमें आई एम गोना यूज दिस गोल्डन ग्लिटर शेड एंड मैं यूजुअली फॉर पार्टीज और वेडिंग्स कुछ भी मतलब ऐसा बड़ा ओकेजन होता है मैं सेम आई शेडो हर बार लगा लेती हूँ सो मैं ये वाला आई शेडो लगाने वाली हूँ फिंगर्स फॉर द विन सो आई एम गोना टेक अ लिटिल बिट white pigmented and just apply it. बहुत नौसिखिया जैसा लग रहा होगा बट ये मेकअप बहुत वर्कआउट करता है. Yeah, my eyeshadow is done guys. This is how my eyeshadow looks. I love the peachy vibes and the golden vibes it's giving. Very summery but yet very partyish feels. So इसके बाद I apply kajal. So I'm using this Color Bar ka kajal, which is one of the best kajals I've discovered. I was a Maybelline girly in kajal, but यार इसके बाद I don't think I'm going back to any other kajal. मैं इसको description में link कर दूंगी तो आप check कर सकते हो. और इसमें ना एक side पे ऐसा blender भी है, so if you wanna give that smoky eye का effect, you can do that. But I'm gonna just take this and apply it to my lower waterline. काजल इज डन. आई लव पुटिंग काजल. मैंने बीच में एकदम छोड़ दिया था बट अब मुझे वापस बहुत अच्छा लगने लगा है. So now I'm gonna apply mascara, which is one of my favorite steps. I'm using the Maybelline Falsies Lash Lift Waterproof Mascara. Waterproof. Usually I don't use waterproof mascara, but क्योंकि it's birthday eve and a lot of people will be coming home, तो मैं mostly अभी अगर मेकअप करूँगी जैसे मतलब मैंने रात में जब मेकअप करा तो वो पूरी रात रहने वाला है. तो then if I have to wear like mascara for more than 4 to 5 hours, then I prefer using the waterproof one. So this one is perfect in that scenario. And let's just apply it. Yeah, my mascara is done. I love it. बहुत basic है but काफ़ी अच्छा लगता है. And I think क्योंकि मेरी eyes बड़ी है तो उस पर थोड़ा सा amp up करने से और ज़्यादा प्यारी लगने लगती है. I love my eyes by the way. I don't know after how long I am filming a Get Ready With Me, but it feels so therapeutic because it just feels like you can be yourself and just do anything you want. So I really like this. Okay, next step is one of my next favorite steps, which is blush. So I'm using this Maybelline Fit Me blush. This is in the shade 40 Proud. बहुत ही प्यारा sun-kissed look है. I don't want to go like too loud. मैं usually बहुत ज़्यादा blush लगाती हूँ, but I want to keep it a little subtle maybe. So I'm using this brush and just dabbing it all over my face. I also take a little bit on my temple, so thoda sa. And yes, my brush is done. Now coming to the last step of this makeup, which is the lips. So whenever someone asks me what lip shade are you wearing, I can't tell because I always end up mixing 2-3 things to actually get the color. So I think I still don't remember what I actually used, but जो मुझे ध्यान आ रहा है उसके हिसाब से सबसे पहले I used this one lipstick, which was by Masaba, Love Child by Masaba. It's in the shade 03 Sweet Supreme. So it's a nudish brownish kind of tone. So let's just apply this one first. I love how such a beautiful nude color this is. Perfect for everyday wear. But because it's a birthday glam thing, I topped it up with this Maybelline Vanilla lipstick. It's in the shade 65 Saucy. Just shake it a little bit. उसके बाद लगाते हैं इसको थोड़ा सा. And then I topped it up with this Maybelline Lifter gloss. I love this gloss so much in this shade 09 Topaz. I love Maybelline के glosses. In general, उनके all products. I think at this point they should sponsor me also.
That's how the makeup turned out. Now I really like this, very subtle, very natural, but very glam at the same time. You can use a makeup fixer if you want, but I hate using a makeup fixer, so I'm not gonna use that. And that's how the makeup looks. Okay, now that the makeup is done, I'm gonna show you guys the hair I made and the outfit I wore. So I wore a very gorgeous corset, but for now, let's do the hair. So, okay, now for the hair part, this is what I did, and I wanted to look like very very glam. So I'll tell you how I made it. So कुछ नहीं करना है, अपने center parting लेना है, and then gonna take all the hair back like this. I think मैं थोड़ा sideways बैठी तो proper दिखेगा. उसके बाद I'm gonna just give it a good twirl, जैसे हम लोग जूड़ा बनाते हैं regular वैसा. If you can see it like this, and then I'm gonna just settle it up with this clutcher. मैंने जूड़ा पिन्स भी लगाई थी बहुत, बट मेरे बाल उससे रुक नहीं रहे थे. एंड नाउ आई अप्लाई द जूड़ा पिन्स बिकॉज हम इसको थोड़ा अपलिफ्टेड देंगे, एंड देन आई विल शो यू हाउ आई विल डू इट. ओके, आगे से 2 लट निकालेंगे, ठीक है, एंड वी आर गोना डू इट लाइक दिस. मैं आई नो अगर अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, इग्नोर दैट. Okay, hair is done, and this is how the hair looks. Very subtle, very glam, and गर्मी बिल्कुल नहीं लगती, और ये पीछे से sideways इतना प्यारा लगता है ना. मतलब you can see in the photos how good it looks. Now let's come to the outfit. Okay, so for outfit I wanted to wear this black corset. ये मैंने thrift page से खरीदा था Instagram पे, कुछ 1100 रुपए का, and it's worth every penny because it looks so pretty, पूरा bridged in feels, and it's adjustable, so you can adjust the size also a little bit. But because I'm a little busty, तो मुझे पहनने में थोड़ी दिक्कत हुई थी इसे. It took me like good 15 minutes to actually wear this. So this is what I wore with a maxi satin skirt. So I'm gonna change and show you guys how it looked. This is how the corset turned out. I love it so much. It fits so well. It looks like a glove. इसके साथ मैंने थोड़ी सी silver accessories paired up करी थी. Literally बस studs पहने थे, एक watch पहनी थी, और एक ऐसा necklace पहना था. I'll attach the pictures here of how I actually ended up looking, and I think this was one of the best birthday looks I've ever created. Do let me know what you think about this, and yeah, that's how I look. So yeah guys, that's pretty much it for my today's video. This was a birthday get ready with me. Hope you guys liked it. Do let me know आपको मेरा look कैसा लगा. सारे products जो हैं वो comments में and description box में मैं pin कर दूंगी. And if you did like it, don't forget to like, share, comment, and subscribe. I'm so sorry, इस साल birthday vlog नहीं है, but I hope you enjoyed the get ready with me, and I'm gonna see you guys super soon with another video. Until then, bye, take care.